Okay, suicide is the number one cause of death. The question is why. Um, उसकी अगर आप वजह तलाश करें तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में डेवलप होते हैं. क्यों डेवलप होते हैं? इसलिए डेवलप होते हैं बिकॉज नंबर वन, मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट गिव यू ए वेरी गुड सेंस ऑफ पर्पस. ये सवाल जो मैं क्यों ज़िंदा हूँ, राइट, और मैं क्यों अपनी इस ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं मैं क्यों उनको बर्दाश्त करूँ. और ये मुश्किलात सिर्फ गरीब लोग एक्सपीरियंस नहीं करते. ये इवन आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस है किसी भी आप लेवल पर हो, यू आर एक्चुअली फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ. ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट इफ योर चिल्ड्रन आर सिक, यू आर इमोशनली डिस्टर्ब. आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं किसी भी वजह से, राइट, यू आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट. तो परेशानियाँ हर तरह के इंसान को आ सकती हैं, किसी भी लेवल पर आ सकती हैं. इट डजंट हैव टू डू योर फाइनेंसेस. ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी. इकोनॉमिक जब हालात ख़राब होते हैं तो लोगों की जॉब्स ख़त्म हो रही होती हैं या फिर उनकी जो इनकम है उतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो अपनी अपने अखराजात को पूरे कर सकें. देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ कोर्स. तो अब प्राइमरली इफ़ यू लुक एट द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज के जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को एक मीनिंगफुल तरीके से अपनी वर्ल्ड व्यू के अंदर इंटीग्रेट करके यू यूज़ देम टू फॉर सम काइंड ऑफ अ सेल्फ realization या what is commonly referred to as self actualization purpose. वो उसका बहुत अच्छा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता मॉडर्न सोसाइटी के अंदर. ठीक है, नीचे ने मिसाल के तौर पे कहीं पर कहा था कि इफ़ यू हैव अ वाई टू लिव फॉर यू कैन बियर एनी हाउ. मतलब ये कि अगर आपके पास ज़िंदगी का कोई मकसद है तो किसी भी किस्म की मुश्किलात से आप गुजर जाते हैं. ठीक है, तो ये एक मेजर मसला है, राइट. इमोशंस को या आपकी सब्जेक्टिव साइड है उसको अंडरमाइन किया मॉडर्न सोसाइटी ने, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस आपकी ज़ात के अंदर क्रिएट होती है. उस डिस्टर्बेंस को आप फिर नम करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिसिन, और वो डिस्टर्बेंस ख़त्म होने के बजाय वो थिंग्स कीप्स ऑन बॉटलिंग अप. और ज़्यादा आप बॉटलिंग अप करते हैं तो इवेंचुअली उससे आपकी सेहत ख़राब होती है. उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप जंक फूड खाते हैं, उससे और मज़ीद सेहत ख़राब होती है इवेंचुअली. तो इस वक्त जो टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ हैं अदर देन सुसाइड, उसमें अगर आप सारी लिस्ट उठा के देखें तो दे आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, उनका ताल्लुक आपके स्ट्रेस से, जंक फूड से, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उससे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़. ठीक है, और उसमें जो साइकोलॉजी है आपकी दैट प्लेज अ वेरी मेजर, साइकोलॉजिकल इश्यूज प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल इन डिस्ट्रॉइंग योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. तो ये मसले मसाइल सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइमरली इफ़ यू लुक एट द रूट कॉज, तो मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट गिव यू अ वेरी गुड conceptual framework, does not give you a very comprehensive और साउंड वर्ल्ड व्यू जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपना ज़िंदगी का कोई मकसद सेट कर सकते हैं, अपने आप को इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं. या जो टेम्पटेशन है जो मार्केट आपको देती है जिसमें आप इवेंचुअली इस्तेमाल हो जाते हैं मार्केट के फेवर में, और यू एक्चुअली अलाउ योरसेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय कैपिटलिज्म. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए यू डोंट हैव अ फ्रेमवर्क बिकॉज इट टेल्स यू कि आपको पैसा चाहिए और आप बोलते हैं अच्छा अभी मुझे पैसा चाहिए. और क्यों चाहिए पैसा चाहिए? बिकॉज आपको गाड़ी, घर और दूसरी चीज़ें खरीदनी है. एंड सब्सिक्वेंटली आई कॉल इट अ हनी ट्रैप. वो आपको बहुत खूबसूरत किस्म की चीज़ें दिखाता है, मार्केट आपको खूबसूरत किस्म की चीज़ें दिखाती हैं, एंड सब्सिक्वेंटली इट ट्रैप्स यू एंड इट टेल्स यू कि इफ़ यू वांट टू बाय दीज थिंग्स यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंड सब्सिक्वेंटली यू हैव टू
कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी एंड और उसके बाद फिर आपको जब पैसा मिलेगा then subsequently you will be able to purchase all of these things. उन चीज़ों को जानबूझ के scarce रखा जाता है through by keeping the price very high. Diamond for example is not scarce. उसकी प्राइस ज़्यादा उस वक्त इस वजह से हुई हुई है बिकॉज एक कंपनी डायमंड्स जो एक्सट्रैक्ट होते हैं दुनिया से उनको अपने वॉलेट्स के अंदर स्टोर करती है और वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं ताकि उसकी प्राइस ऊपर चली जाए, राइट. जो एलीट किस्म की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है दे आर नॉट एलीट बिकॉज दे आर रेयर नेचुरली, दे आर रेयर आर्टिफिशियली. उनकी एक बहुत ही शॉर्ट सप्लाई के अंदर उनको क्रिएट किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल की जा रही होती हैं ताकि एक बहुत थोड़े से लोग उनको परचेस कर सकें और बाकी सब के सब क्या वो उनको देखते रहें कि यार हाउ आई कैन एक्चुअली गेट टू दिस पॉइंट. बिकॉज लेट्स सपोज आप अगर लैम्बोर्गिनी इस प्राइस पे बनानी शुरू कर दें जिसमें जो बंदा मेहरान अफोर्ड कर सकता है वो लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर रहा है, ऑलराइट. ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ इवन पॉसिबल टू क्रिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर फ्री. उसका एक पीछे पूरा मैकेनिज्म मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता अभी, मकसद ये नहीं बताने का. हाइपोथेटिकली आप ये अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग कि ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी इज़ अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन टू ड्राइव, तो लैम्बोर्गिनी की वैल्यू वुड बी लाइक डर्ट, ठीक है, बिकॉज हर बंदे के पास है. लैम्बोर्गिनी या बुगाटी या कोई भी लग्जरी वॉचेज़ हैं वगैरह वगैरह, दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर केप्ट रेयर, राइट. उनको और इसी वजह से फिर सब्सिक्वेंटली लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ की बिकॉज वो हर एक के पास नहीं है, ठीक है. And subsequently the system traps you into believing that you have to work very very hard to get on the top to buy all of these superficial things, or without realizing that none of these things actually makes you satisfied at the end of the day. छोटी सी मैं मिसाल दूँ यहाँ पे, I was in कतर और वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फ्रेंस अरेंज की हुई थी एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्टे एंड आवर लॉजिस्टिक्स एंड दे वर using all kind of luxurious automobiles, and जो वहाँ पे जो स्टे था वो बड़ा luxurious किस्म का था, but I could not enjoy the whole experience because I was getting headaches. I was getting दूसरे दिन I got a toothache, और दांत की तकलीफ अगर आपको हुई है तो आपको अंदाज़ा है कितनी ज़्यादा. मेरे पास पैनाडोल थी उस वक्त, पैनाडोल मैंने 2-3 दफ़ा ली लेकिन ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज पैनाडोल इज़ नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी. और सब्सिक्वेंटली आई वाज लाइक यार व्हाट द हेल. अगर मुझसे कोई कहता है कि आप एक सस्ती जगह पे चले जाएं लेकिन हम आपको साथ में मेडिसिन भी दे देंगे, तो आई वुड हैव डेफिनेटली ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन कि यार फाइन मुझे कोई मोटरसाइकिल पे छोड़कर आ जाए एयरपोर्ट, आई डोंट माइंड, बट मेरी दांत की तकलीफ जो है वो ठीक होनी चाहिए. तो योर हेल्थ इज़ सिग्निफिकेंटली मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दीज लग्जरीज फॉर एग्जाम्पल. और आपकी हेल्थ का ताल्लुक आपके पैसे से नहीं है, इट्स मोर अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट यू मेंटेन. आप अपनी इमोशनल हेल्थ को किस तरह मेंटेन रख रहे हैं, आपकी जो दूसरों के साथ जो ताल्लुक आता है वो किस तरह के, आप किस तरह की खुराक खा रहे हैं. हेल्दी फूड इज़ ठीक है रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जंक फूड के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट बहुत सारी जो एक्सपेंसिव किस्म की मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे रिलेटिवली फिर भी बहुत सस्ता है, और ऑफ कोर्स दवाओं से भी डेफिनेटली सस्ता है. वंस अपॉन अ टाइम आई वाज सिटिंग इन मालदीव्स में एक हम बीच पे बैठे हुए थे, एक कॉन्फ्रेंस थी, अगेन कॉन्फ्रेंस वाले समटाइम्स तरह की बीच कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं. And I was not able to enjoy the whole experience despite the fact Maldives की जो beaches हैं they are one of the most beautiful in the world. I was not able to enjoy the whole experience because my daughter was sick. And I was away. She was in another country, and I was like, यार मैं क्या करूँ. I literally want to run away from that place. I wanted to be with my daughter in that moment because when she's sick, she's asking कि बाबा किधर है. Alright, and I was not able to do that in that moment. Thankfully, my flight was very next day, and eventually I left. And thankfully also that my daughter was not very seriously ill. हल्का फुल्का उसको बुखार था, and things were okay. और खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा कोई serious situation होती तो you can imagine. तो इस तरह के experiences आपको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी में जो ज़्यादा important चीज़ें वो क्या है. इसी तरह मैं किसी की वीडियो देखा था, कोई खातून थी, she was living in a very luxurious apartment. Her husband was very very rich and
her husband actually died and she inherited all the property and she was like कि यार मैं अकेले क्या करूँ इन सारी चीज़ों के साथ, and she was not able to enjoy all of that, and subsequently she sold everything and she went to a rural area और वहाँ पे उसके कुछ relatives थे और उनके साथ बहुत ही एक humble किस्म की लाइफ में उसने अपना, तो इस तरह की आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलती है, because when you realize what are the important things in life, all of these material things become um, unimportant. And this is the problem of modern society because they have forgotten all of these things. वो पैसे की दौड़ में और चीज़ों की दौड़ में और लग्जरी आइटम्स की दौड़ में वो अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने एंगेज कर लिया है कि बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन के ज़िंदगी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है. Subsequently, they're suffering, and subsequently, they're unable to understand their needs. उनकी psychological, emotional, social जो needs हैं वो पूरी नहीं हो पाती subsequently, और वो अपने आप को consume करते रहते हैं manipulate होने के बाद, और उसके नतीजे में what happens कि a point comes कि when they are emotionally sick, they are psychologically sick, they are physically sick, and subsequently उनको और कोई ज़िंदगी में कोई और मकसद भी उनको समझ में नहीं आ पाता है. वो बोलते हैं कि यार ये क्या बकवास है. शुरू शुरू में वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहें. डिस्ट्रैक्शन वाली जो इंडस्ट्री है वो कोई 2 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू है उस वक्त. वो इतना इतना मार्केट बिजनेस करती है जस्ट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दैट यू हैव इनसाइड. आप साइकियाट्रिक ड्रग्स यूज़ करते हैं और सब्सिक्वेंटली अगर इन सारी चीज़ों से मसला हल होता हुआ आपको नज़र नहीं आता, then you commit suicide. Right, and that is why modern society के अंदर you find such a high percentage of suicide. और वो मैंने शुरू में बताया कि इसका जो पार्ट 1 था वीडियो का, मैंने उसमें बताया कि it is because um, you don't have you don't understand so many important the needs that you have, and subsequently you distract yourself, and because of these distractions and these numbing technologies and numbing products that are available in the market, suicide की percentage is like not as high जितनी वो हो सकती है. ठीक है, अभी वो टॉप 10 में कहीं पे जो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ है वहाँ पर कहीं पे वो फॉल कर रही है. राइट. अच्छा, अब anyone who can actually solve this problem is eventually going to dominate the modern society. बिकॉज बहुत सारे लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि पैसे के पीछे भाग के और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग के और मुख्तलिफ लग्जरी आइटम्स के पीछे भाग के हम उन नीड्स को पूरा नहीं कर सकते. एंड बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे आउट. तो एनीबडी हु कैन एक्चुअली गिव देम दिस सोल्यूशन इज विल eventually going to dominate the Western society in the modern society in the next 50, 60, 70 years. Climate change को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया. Climate change is another problem because आप जब आप कंजम्पशन के पीछे भागते रहते हैं तो यू कंज्यूम अननेसेसरीली वेरी वेरी हाई. अभी कंजम्पशन बहुत हाई चली जाती है और सब्सिक्वेंटली यू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट, और उस वेस्ट के नतीजे में जो इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी जो क्रिएट हो रही है उसका भी कोई सोल्यूशन मॉडर्न सोसाइटी के पास नहीं है. उसके लिए अपनी उनको कंजम्पशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, और कंजम्पशन को रिड्यूस कर नहीं सकते. वाई? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. तो मॉडर्न सोसाइटी इस वक्त जिस अलमिया का शिकार है, जिस मसाइल का शिकार है, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ सोल्यूशन, एंड एनीबडी हु कैन प्रेजेंट देम दिस सोल्यूशन, इंक्लूडिंग ऑल द ईस्टर्न ट्रेडिशंस, इंक्लूडिंग इस्लाम इन पर्टिकुलर. वाई? बिकॉज जो कम्प्रीहेंसिव आपको मॉडल इस्लाम दे रहा है वो कोई दूसरा आपको नहीं दे रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स डू नॉट हैव दैट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट लेवल ऑफ understanding about the modern problems of the modern society and what solutions they can actually offer to the modern world. उल्टा वो मॉडर्न सोसाइटी की मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट कर करके अपने आप को कूल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं विदाउट रियलाइजिंग के असल मसला एक्चुअली है क्या और उनकी क्या सुपीरियॉरिटी है इन टर्म्स ऑफ when you see all of these problems in the modern society. Alright, Bill Halak has talked about this in his book. वो कह रहा है कि ये मसाइल है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, इस्लाम has a solution to that, and Muslims need to realize instead of being stuck into this state of inferiority complex, they need to understand that they have the solution. और मॉडर्न सोसाइटी के ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय अपने आप को मॉडर्नाइज करके through this process of Sharia compliance, they need to offer the solution to these problems.
ऑलराइट, तो हमारी अपनी भी सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी और सब्सिक्वेंटली मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, और उस ऑफ कोर्स वो इसके थ्रू आप उनको इस्लाम की तरफ भी इनवाइट कर सकते हैं इवेंचुअली। थैंक यू।